The thickness, width and the length of a metal slab are 50 into 250 into 300 600 mm respectively. A rolling operation on this slab reduces the thickness by 10% and increases the width by 3%. The length of the rolled slab is, देखिए बेटा ये जो क्वेश्चन है रोलिंग का क्वेश्चन है, इसमें अपने को एक चीज समझनी है कि जो मटेरियल का टोटल वॉल्यूम है वो बिफोर एंड आफ्टर सेम रहता है. The volume that gets inside the rolling balls or the rolling cylinders, the same volume gets out. ठीक है ना, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हमने तो कोई मटेरियल ऐड या कोई मटेरियल सब्ट्रैक्ट किया नहीं, सिर्फ उसे डिफॉर्म किया, उसका शेप चेंज किया. ठीक है. So as you can see, the concept here is that the total volume in is equal to the total volume out. So with that note, I am going to calculate the total volume in, that is 50 into 250 multiply by 300 600 is equal to V out. So rolling operation, the thickness of the slab reduces by 10%. So the thickness will be 45 mm now, which is 90% of 50 mm because it reduced by 10%, है ना. Multiply by the width increases by 3%. So 250 will become 257.5. And at last they are asking me what will be the new length of the rolled slab. So let us just calculate this. And we are getting the value. 388.349 millimeter. Yes, so this is the final answer. So I am going to put the answer in the fill in the blanks. 3883.49 mm, rounding off to 2 decimal places. So दोस्तों ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. आई होप कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर नहीं समझ में आया तो राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल पर्सनली रिप्लाई टू दोस कमेंट्स. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.